Radhe Radhe. Welcome to my economic class. Today we will discuss MCQs from the cardinal approach and also the previous questions that have appeared in the CPET entrance examinations. First question: which of the following are the basic assumptions of cardinal utility analysis? क्वेश्चन कौन देइछि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस रो assumptions कौन. फर्स्ट ऑप्शन यूटिलिटी इज ए मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी. सेकंड ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस विथ चेंज इन रियल इनकम. थर्ड ऑप्शन utility is derived from various goods are interdependent. Fourth option the use of introspective method in judging the behavior of marginal utility. आमे क्लास रे पढ़िथिले कार्डिनल यूटिलिटी assumptions कोन थिला utility is measurable and cardinal utility is measurable and absolute utility measurable in absolute numbers. आमर यूटिलिटी को आमे कार्डिनल नंबर एब्सोल्यूट नंबर रे मेजरमेंट करिबा and it is quantifiable entity. Quantifiable means quantity रे मेजरमेंट करि परिबा. आ पड़थला कोन मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज कांस्टेंट किंतु ऑप्शन 2 कोन दैछि मार्जिनल यूटिलिटी मनी चेंजेस. इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 utility is derived from various goods are interdependent. आम पढ़थिले ऑब्जेक्शन ले जो हमर डिराइव करिया वेरियस गुड्स यूटिलिटी कोन इंडिपेंडेंट. एटी कोन दिस इंटरडिपेंडेंट मींस द वन गुड्स कंजप्शन कले तार यूटिलिटी अनदर गुड्स यूटिलिटी से द डिपेंडेंट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 4 द यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन जजिंग द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. हमर मार्जिनल यूटिलिटी को इंट्रोस्पेक्टिव मेथड द्वारा हम जज करबा. इनकरेक्ट. आमे कोन करबो कंज्यूमर हिमसेल्फ कोन करबो जज करबो तार मार्जिनल यूटिलिटी को. तो आंसर इज ऑप्शन 1 utility is measurable and quantifiable entity. Question 2 which of the following are conditions of consumers equilibrium in a two commodities case where utility and P1 P2 are prices of two goods. आमे चंती कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केते बेले हबो जेतेले मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइड इक्वल टू px. दैट मीन्स हमर मार्जिन टू मनी इक्वल टू mux डिवाइड बाय px. आम पाखरे जेते कि हमर मनी थिबो से मनी को यूटिलाइज करबा कोन बा गिवन प्राइसेस से गुड्स प्राइस कांस्टेंट होइथिबो. आमे ताको से गुड्स रे हमें स्पेंड करले बाय करले से गुड्स रो तार यूटिलिटी सहित कोन थिबो मार्जिनल यूटिलिटी सहित इक्वल होथिबो. तो हमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केते पाइबा मार्जिनल यूटिलिटी मनी इक्वल टू mux डिवाइड बाय px. आदि टू कमोडिटी केस रे कोन हबो मार्जिनल यूटिलिटी मनी इक्वल टू mux डिवाइड बाय px इक्वल टू my डिवाइड बाय py. किंतु ऑप्शन हमर कोन अछि देखिबा. फर्स्ट ऑप्शन del u डिवाइड बाय del x इक्वल टू 0. सेकंड ऑप्शन del u1 डिवाइड बाय del u2 इक्वल टू 0. थर्ड ऑप्शन सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0. फोर ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव. आ भीतर हमर कोनोसी आंसर अपन आमे जानचंती कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केते हबो mux डिवाइड बाय px इक्वल टू my डिवाइड बाय py. तो दैट ऑप्शन नहीं तेनो आंसर हबो नॉन ऑफ द अबव. आफ्टर रीचिंग द saturation point consumption of additional units of the commodity causes. क्वेश्चन दीची कोन आफ्टर रीचिंग द saturation point means जेटी कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पाउची इक्विलिब्रियम होची सही पॉइंट परे जदी आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट जले से मैक्सिमम पॉइंट बा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन करछ उडा कंज्यूमर सही पॉइंट परे इक्विलिब्रियम पॉइंट परे यदि कंजप्शन करबो एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी रो एडिशनल कंजप्शन करबा द्वारा कोन हबो. फर्स्ट ऑप्शन टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू इंक्रीज. सेकंड ऑप्शन total utility and marginal utility both to increase. Third option total utility to fall
and marginal utility to become negative. 4 option, total utility to become negative, marginal utility to fall. आम जो स्टाचुएसन पॉइंट जो कंज्यूमर मैक्सिमम पॉइंट रे पहुँच जाए जो कंज्यूमर अटेंड करता है मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन तापर आफ्टर द मैक्सिमम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट जो कंज्यूमर एडिशन करे एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कौन होता है नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी फॉल्स होता है, टीयू फॉल्स एंड एमयू नेगेटिव। स्टैचुरेशन पॉइंट रे कौन होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, marginal utility equal to 0 तेणु ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, टोटल यूटिलिटी फॉल एंड marginal utility become negative। मन रखिबो स्टैचुरेशन पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट जोटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, marginal utility 0। आफ्टर स्टैचुरेशन पॉइंट marginal utility नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following concepts are most closely associated with Alfred Marshall? क्वेश्चन कौन देछि ऑप्शन भितर कोटा हमर आल्फ्रेड मार्शल थ्योरी रे कोटा क्लोजली एसोसिएटेड है को कांसेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सेकंड ऑप्शन प्राइस मैकेनिज्म अंडर मोनोपोली, ऑप्शन थर्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, ऑप्शन फोर इंटरेस्ट थ्योरी। तेणु आल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल अप्रोच देते और कॉन्सेप्ट कौन था मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी x divided by px is greater than marginal यूटिलिटी y divided by py the consumer should buy। जदि आम कौन कमोडिटी कंजप्शन कर मार्जिनल यूटिलिटी कौन मोर देन हो एनदर बा अदर कमोडिटी ठारू अदर कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ठारू जो कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी अधिक हम आम से कमोडिटी बाय करवा। तेणु ये देखिए कौन मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइड बाय पी एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी वाई डिवाइड बाय पी वाई। आम यदि एक्स कमोडिटी किणुंट तार मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होची वाई कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ठारू। तेणु आम कौन करवा मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, आम अधिक एक्स कमोडिटी को बाय करवा आ लेस क्या को बाय करवा वाई कमोडिटी को। व्हाट डज द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन? इकोनॉमिक्स रे मार्जिनल रो मीनिंग कौन? मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा एडिशन, तेणु आंसर इज एडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन ऑफ ए फ्री गुड विल बी कैरिड टू द पॉइंट एट व्हिच डैश। मीनिंग कौन दूची जिते बेले गोटे फ्री गुड थी फ्री गुड को आम को पॉइंट जाए कंजप्शन करवा। फर्स्ट ऑप्शन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड equals the marginal utility derived from the consumption of all other goods. Second option, the total utility derived from the good equals the marginal utility derived from the consumption of all other goods. Third option, the total utility derived from the good is maximum. Option 4, the marginal utility derived from the good begins to decline. क्वेश्चन कौन देछि फ्री गुड मीन्स प्राइस इक्वल टू 0। फ्री गुड्स को आम कौन बाय कले आम कंजप्शन करवा ताको आम कौन सी कॉस्ट बा कौन सी पेमेंट करने पड़ो ना। तेणु फ्री गुड्स से प्राइस इक्वल टू 0। सिंस द गुड इज फ्री देन प्राइस इक्वल टू 0 द कंज्यूमर विल कंज्यूम इट अंटिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। यदि फ्री गुड्स गोटे कंज्यूमर कंजप्शन केते जाए करिवो जेते जाए तार मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 जाए से कौन कर कंजप्शन कर मार्जिनल यूटिलिटी 0 एट दिस पॉइंट टोटल यूटिलिटी कौन हम टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। माने जो गोटे फ्री गुड्स को गोटे कंज्यूमर केते जाए कंजप्शन करिवो जेतेबेले मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 मीन्स टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। तेणु गोटे फ्री गुड्स को कंजप्शन करबा केउ पॉइंट जाए जे टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड इज मैक्सिमम टी यू कौन हम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हम से पॉइंट जाए गोटे कंज्यूमर कंजप्शन करबो। फास्ट कौन करबो पिला माने क्वेश्चन को भलसे बुझिबो तापर तार आंसर दबो। आज एतिक आम एमसीक्यू कले
नेक्स्ट क्लास रे आउर अधिक क्वेश्चन डिस्कशन करबा। थैंक यू।